जी मुझे आप बताइए, अडॉप्टर ट्रेड, अडॉप्टेशन किसे कहते हैं? अडॉप्ट करना, हाँ। अच्छा आप कहते हैं, आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का बंदा इधर आके रहे, उसे कहेंगे अडॉप्टेशन, और वो जहां अच्छी तरीके से रह रहा है उसे हम कहेंगे एडॉप्टेशन। पोटैटो हमारे इधर ग्रो हो रहा है, लेकिन इसका ओरिजिन नहीं है यहाँ पर। पोटैटो का ओरिजिन है दुनिया में सबसे पहले पोटैटो, वाइल्ड पोटैटो। हमें किसे कैसे पता चलेगा कि किसी चीज का ओरिजिन कहाँ हुआ था? जहां हम उनके वाइल्ड स्पीशीज मिल सके। क्या वाइल्ड स्पीशीज अगर किसी चीज की जहां मिले, तो हम कह सकते हैं कि उस स्पेसिफिक गाय का, गाय का, टाइगर का, बैक्टीरिया का, प्लांट्स का ओरिजिन वहां हुआ है, जहां जिस इलाके से उसके वाइल्ड स्पीशीज मिल सके। समझ आ गया आपको? अच्छा अब हमें पता चलता है कि पोटैटो कहीं वाइल्ड पीरू में है। पीरू है लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, क्या पीरू वो एक इलाका है, वहां इसकी वाइल्ड स्पीशीज है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर पोटैटो जितना ग्रो हो रहा है ये अडॉप्टिव है। क्या है? जो किसी दूसरे इलाके में जाए और वहां के एनवायरमेंट के मुताबिक अपने आप को एक्लेमेटाइज करें और वहां ग्रो करना शुरू कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? अडेप्टिव। क्या कहेंगे? अब वो ट्रेड्स होते हैं जहां उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ट्रेड है जिसकी वजह से वो अडॉप्टेशन। अगर एक्सट्रीम कंडीशन, अगर आपको पता है कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा टेम्परेचर होता है? शाहवेज, शाहवेज ये नाम आपका। 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कोई चीज जिंदा रह सकती है? क्या होती है? बॉइलिंग वाटर कौन सा होता है? जब पानी बॉयल हो रहा होता है उसे क्या कहते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 120 डिग्री सेंटीग्रेड दुनिया में किसी इलाके का टेम्परेचर हो, क्या वहां कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकता है? रह सकते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी, ठीक है, उसे कहते हैं थर्मस एक्वाटिकस। क्या कहते हैं? थर्मस एक्वाटिकस। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि इस टेम्परेचर के ऊपर भी, इट मीन अडॉप्टेशन उन्होंने इस स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर कैसे की, दिस इज अ मिरेकल। उनकी जीन्स कौन से हैं, उनके एंजाइम ऐसे कैसे हैं कि जो इतनी हीट के अंदर जाकर उसकी चेंज नहीं आती। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कोई ऐसे ट्रेड्स हैं जो उसको उस टेम्परेचर के अंदर जिंदा रख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह -65 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी हमें प्लांट्स ऐसे मिले हैं जो ग्रो कर रहे हैं। -65 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी ऐसी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स and animals are, we found that they are living there. How they live? There is a question. What they actually do? What are the processes these species have? अगर हम इसको स्टडी करेंगे, we can end up with a surprising conclusion. लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है, लाइफ कैसे है, कैसे ये स्पीशीज इन डिफरेंट एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सरवाइव कर रही है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि कैसे ये लोग वहां पर जाते हैं, वहां उनके बैक्टीरिया आइसोलेट करते हैं। वहां पर आप चाइना में एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने सिर्फ एक जहाज बनाया हुआ है, ऐसी जगह जाते हैं जहां पर टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहां जाते हैं जहाज के अंदर, समुद्र के अंदर कोई ऐसा पानी की जगह है, वहां जाते हैं, बैक्टीरिया वाटर लेकर आते हैं, वो स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हाँ इधर लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च के ऊपर पैसा यूएसए आजकल जो है चाइना लगा रहा है। इतनी फंडिंग अवेलेबल है रिसर्च के अंदर, इसलिए दुनिया में हर जगह मेड इन चाइना प्रोडक्ट हम हंसूस के डाल देते हैं। हम कहते हैं यार लगी समझ? ये हमारा मसला है कि हम काम समझते हैं कि हम ना हंसेंगे ना तो हम ऑर्डर लेंगे, हम बेवकूफ से पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि ये देखो ये तो ऐसी है, जो लोग कहेंगे ये इसकी इज्जत नहीं होती है। ऐसे कैसे होती है? मॉडर्न तब होंगे when An adaptive trait is a characteristic or feature of an organism that has evolved over time to increase its chances of survival and reproduction in a specific environment. These traits enhance the organism's ability to cope with environmental challenges and can be structural, behavioral, or physiological. Key points about adaptive traits. Evolutionary advantage.
Adaptive traits are the result of natural selection, where individuals with beneficial traits are more likely to survive and pass those traits on to the next generation. Types of adaptive traits. Structural traits. Physical characteristics, such as the shape of a bird's beak or the fur of an animal, which help it better survive in its environment. Behavioral traits. Behaviors that enhance survival, such as migration patterns, mating rituals, or feeding strategies. Physiological traits. Internal processes, such as the ability to regulate body temperature, resist diseases, or metabolize certain foods. Examples of adaptive traits. Camouflage. The ability of an organism to blend into its environment, like the peppered moth, which changes color to hide from predators. Thick fur. Animals in cold climates, like polar bears, have thick fur to insulate against cold temperatures. Long legs for speed. Cheetahs have long legs and specialized muscles that allow them to run at incredible speeds to catch prey. Adaptive traits increase the likelihood that an organism will thrive in its environment, reproduce successfully, and pass on these traits to future generations. In biology, an adaptive trait refers to a characteristic of an organism that has evolved to improve its chances of survival and reproduction in a specific environment. Adaptive traits can be structural, behavioral, or physiological. Here are some examples. 1. Camouflage, structural adaptation. Example: peppered moths, Biston bechellaria. The coloration of the peppered moth helps it blend into its environment. In industrial areas, where tree trunks became darker due to pollution, the dark-colored moths had a survival advantage because they were less visible to predators. In cleaner environments, lighter moths were better camouflaged. 2. Long neck in giraffes, structural adaptation. Example: giraffes. Giraffes have long necks, an adaptation that allows them to reach and feed on leaves high up in trees, where few other herbivores can reach. This trait helps them survive in environments with limited ground-level vegetation. 3. Beak shapes in finches, structural adaptation. Example: Darwin's finches. The beak shapes of finches in the Galapagos Islands vary depending on their diet. For example, finches with large, strong beaks are adapted to eating seeds, while those with smaller, finer beaks can feed on insects. This adaptation allows them to occupy different ecological niches. 4. Hibernation, behavioral and physiological adaptation. Example: bears and other mammals. Some animals, such as bears, hibernate during the winter months to survive periods of food scarcity. During hibernation, their metabolism slows down, conserving energy and allowing them to survive when food is not available. 5. Thermoregulation, physiological adaptation. Example: Arctic fox. The Arctic fox has thick fur and a high-fat layer beneath its skin to insulate against cold temperatures. Its fur changes color with the seasons, turning white in winter for camouflage in the snow and brown in summer to blend with the rocky tundra. 6. Convergent evolution, structural adaptation. Example: dolphins and fish. Dolphins and fish have similar body shapes, such as streamlined bodies and fins, that are adaptations for fast swimming. Although dolphins are mammals and fish are not, their similar body shapes are an example of convergent evolution, where unrelated species evolve similar traits due to similar environmental pressures. 7. Venom, physiological adaptation. Example: snakes, e.g., cobras, rattlesnakes. Many species of snakes have evolved venomous fangs that allow them to immobilize or kill prey and defend against predators. The venom varies by species, but is adapted to efficiently capture prey or protect the snake in its specific environment. 8. Migration, behavioral adaptation. Example: monarch butterflies. Monarch butterflies migrate thousands of miles from North America to central Mexico to escape cold temperatures and find more favorable breeding conditions. This seasonal migration helps ensure their survival in environments with seasonal changes. 9. Photosynthesis, physiological adaptation. Example: cacti. Cacti have evolved to perform a specialized form of photosynthesis called crassulation acid metabolism, CM, which allows them to open their stomata, pores on the surface of leaves, at night to minimize water loss, rather than during the day when the sun is hottest.
This adaptation allows them to conserve water in arid environments. 10. Social behavior, behavioral adaptation. Example, ant colonies. Ants exhibit complex social behaviors where individuals work together to find food, protect the queen, and build their nests. This division of labor and cooperation helps ants to adapt to their environment and thrive in various ecosystems. 11. Parasitism, behavioral and physiological adaptation. Example, parasites like tapeworms. Tapeworms have evolved specialized hooks and suckers that allow them to attach to the intestines of their host, enabling them to absorb nutrients directly from the host's digestive system. This adaptation allows them to survive inside their host for long periods. 12. Light sensitivity, behavioral and physiological adaptation. Example, nocturnal animals, e.g., owls, bats. Nocturnal animals like owls and bats have developed specialized adaptations for low-light conditions, including enhanced vision or echolocation abilities. These traits allow them to hunt or navigate effectively at night, avoiding daytime predators and competitors. 13. Defensive mechanisms, behavioral and structural adaptations. Example, porcupines. Porcupines have quills that they use as a defense mechanism against predators. The sharp quills detach easily when a predator comes into contact with them, making it difficult for the predator to continue its attack. This adaptation increases the porcupine's survival rate. 14. Reproductive strategies, behavioral and physiological adaptation. Example, turtles, e.g. sea turtles. Many turtles, such as sea turtles, lay a large number of eggs in nests on beaches. This high reproductive output increases the chances that at least some of the offspring will survive to maturity, despite high predation rates in the early stages of life. These examples showcase the incredible variety of adaptive traits that organisms develop over time to better survive and reproduce in their specific environments.